गुड इवनिंग वार्ता. Finances में हम समझ रहे थे the electoral funding. There are three things that we knew already about the electoral funding. That initially you can give contribution up to so 20,000 तक you could make anonymous contribution. Above 20,000 all contribution must be reported to election commission with name. ठीक है, तो इसके ऊपर जितनी डोनेशन थी that must be informed to ECI with names. किसने किसने कहाँ कहाँ डिनोट किया. But as I told you, there is a problem of anonymous donation. और जरूरी भी है नहीं भी. Why it is necessary? Because imagine yourself as a businessman. तो you are funding one candidate. Of course आप एक ही को फंड करोगे. इतना पैसा थोड़ी ना सबको कर दोगे. So if you're funding one candidate, if your candidate loses, then the other candidate will take revenge. And कोई नहीं चाहता तो disclose their sources of income. So we don't want to. Main concerns में यही है. Political party को ऐसा जितना फर्क नहीं पड़ता. Political party, if they are receiving funding, they don't care much. But the people do care who are contributing to a political party, especially when you are a business. अब भाई आप बिजनेस में हो, यूनियन गवर्नमेंट में आप दे रहे हो पैसा. मान लेते बीजेपी को गिविंग मनी, इट इज इन यूनियन. कांग्रेस तो आपका स्टेट में है. फॉर एग्जांपल झारखंड में आई बिलीव, झारखंड में आई थिंक कांग्रेस है जहां तक है. तेलंगाना में कांग्रेस हैज कम इनटू पावर. So even if you are giving money to BJP center, but Congress is present in the state, and you need both government to start anything. So in that scenario, you don't want to take the risk of antagonizing one over another. That is the problem everyone faces. So 2,000, 20,000 was anonymous. Above this, you must report to election commission. So the BJP government reduced this to 2,000 only. Up to 2,000, there could be anonymous donation, but there was a catch. The catch was that above 2,000, you must report to ECI. But there was a catch. The catch was, in case of electoral bond, you don't need to report ECI. ये सबसे बड़ी बात थी. You will report to ECI how much fund you got, but you will not report to ECI from whom. Who gave you? क्योंकि आपको खुद को नहीं पता किसने दिया है. ये सबसे बड़ी बात है. कैसे वर्क करता है इलेक्टोरल बॉन्ड? बेसिकली SBI will issue bonds that anyone can purchase. Anyone, XYZ person can purchase. When you purchase that bond, it is of the amount which is not linked to any face. The person who is buying the bond, their name is not mentioned. The party you give to the bond, their name is not mentioned. Only the amount is mentioned. So I will go to SBI, give them money, not in cash, but electronic, other transfers. I will give that money to SBI. SBI will give me bond. I can deposit to any political party. You will take that bond to any political party of your liking. The political party will again take that back to SBI. Then SBI will deposit money into that political party's account. That's how electoral bond works. But problem कहाँ है? दो प्रॉब्लम. पहला तो ये highly anonymous. Who is contributing to whom nobody knows, which to some extent is required, particularly by the businesses. The second biggest problem is SBI knows who make electronic payments or whatever payment. You will not make cash payments. कैश पेमेंट्स में पता नहीं लगता किसने बॉन्ड लिया. तब SBI को भी नहीं पता होता. बट गवर्नमेंट ने क्या करा है? गवर्नमेंट has banned cash bonds. You cannot take bond in cash. You must take bond in other mechanism. That was the problem I feel. They must have allowed cash, but a condition. Cash money, yes, cash can lead to money laundering, but you can include disclosure of source of information. Na? You can buy that. If, for example, I'm withdrawing amount from my account and buying from the cash, what's the problem? You can verify na, from where this cash is coming. And if मान लेते you are bringing, तो पर ये भी प्रॉब्लम है. You are buying bonds of करोड़ रुपीस. अब करोड़ रुपए कैश में लेके कहाँ घूमोगे? चलिए जो भी है. So this was the second change. The first change is 20,000 anonymous donation has been reduced to 2,000. Above 2,000, you must report to ECI. Electoral bonds of any amount does not require any disclosure to anyone because these are anonymous. No political party knows which person gave them how much fund.
The only thing is they must report to ECI about the quantum of fund, not the other details. Chaliye, fine, no issue over there. Third reform, Companies Act. Under Companies Act, every company who is giving fund to political party, first of all, it cannot go around 7.5% something था, एक बार चेक कर लेंगे इस फिगर को. तो you cannot give more than 7.5 or something % of your net profit. इससे ज्यादा नहीं दे सकते. First thing. Second thing, whatever fund a corporate gives to the political party, they must disclose their name to in their annual report. Under Companies Act, every company creates an annual report, kind of audit report, in which they talk about how much we earn, how much we spend, where we spend, what are the program agenda. जैसे गवर्नमेंट का बजट होता है, गवर्नमेंट बजट सेम होता है, गवर्नमेंट प्रेजेंट ऑल व्हाट हैपन, व्हाट मे हैपन, व्हाट आर द एलोकेशन, व्हाट आर द इनकम्स. सेम वे में एवरी कंपनी प्रेजेंट देयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, काइंड ऑफ एनुअल रिपोर्ट हर कंपनी बनाती है. So they have to, under Companies Act, you must mention how much funding you gave to which political party. अब government brought an amendment through Finance Act. सबसे बड़ी बात ये थी that these were created through budgeting process. ये किसी लॉ से नहीं बने थे, ये budgeting process से बने थे. Budgeting process में remember we discussed appropriation bill and finance bill. They were made through finance bill. Finance bill के through government of India amended the Representation of People Act to decrease this limit, introduce electoral bonds as well as Companies Act. So they all were introduced through Finance Act. Reason simple है, because Rajya Sabha has no power over that. Only Lok Sabha passes budget. Anyway, so recent May, of course, it was challenged to Supreme Court of India. Supreme Court of India has upheld all amendment as unconstitutional. तीनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर. सारा नहीं, सॉरी, दो वाला नहीं, सॉरी, इसको छोड़िए, ये दो. These two amendment has been declared unconstitutional now. It means that you have to disclose. अब कोई political party funding देती है, cannot give more than 7.5% of their net profit, and they must disclose the source of income as well. Plus, electoral bonds are no longer available. अब इसमें क्या चाहता है, इलेक्शन कमीशन से ने बोला, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड टू द एसबीआई टू इन्फॉर्म द इलेक्शन कमीशन विद इन, आई थिंक, 1 month. मार्च का टाइम है, जाता मुझे याद आ रहा है, शायद कल तक है. ओके, तो इट हैज बीन गिवन कि यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल द पीपल यू हैव गिवन बॉन्ड. अब एसबीआई हैज अपील्ड टू द सुप्रीम कोर्ट, गिव अस टाइम टिल जुलाई का टाइम मांगा. सीधी सी बात है, इलेक्शन तब तक खत्म हो जाएंगे. बेसिकली इट्स सेइंग प्लीज गिव अस द टाइम, क्योंकि रीजन समझिए, if these bonds are disclosed, तो ऑब्वियसली बात है, सबको पता लग जाएगा किसने कितने बॉन्ड खरीदे, सबको पता है किसने खरीदे, बस प्रूफ नहीं है. एक बार ये डिस्क्लोज हो गए तो प्रूफ भी मिल जाएगा आपको. एंड अपोजिशन पार्टी विल ऑफ कोर्स प्ले दिस. दे विल प्ले दैट हाउ द गवर्नमेंट हैज गॉट बॉन्ड फ्रॉम प्राइवेट, और दो ही लोगों का नाम लेंगे, वो अडानी अंबानी. अंबानी शायद ना भी ले, अडानी पक्का बोलेंगे वो. एंड ऑफ कोर्स दैट इज हाउ क्विड प्रो क्वो वर्क्स. पर समझिए, अपोजिशन के आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, ऐसा इंडिया स्पेसिफिक नहीं है. डोंट थिंक दैट इट इज इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम. इट्स अ इशू विद ऑल डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड. ऑल डेमोक्रेसीज आर नॉनदलेस कंट्रोल्ड बाय द कैपिटलिस्ट, बिकॉज अल्टीमेटली फंडिंग तो वो ही देते हैं. लेकिन यहाँ पे एक और चीज समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स डू नॉट फेवर बीजेपी. इलेक्टोरल बॉन्ड्स फेवर एनी पार्टी इन पावर. कल कांग्रेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में आती तो कांग्रेस भी इसका फायदा उठाती. सिंपल सी लॉजिक है. और ये कुड प्रो क्वो है, दैट इज द नेक्सस. ये हमें पहले से पता है. 1970s या 80s में कमीशन अपॉइंट हुई थी, बीबी वोरा कमेटी, गवर्नेंस में आप करेंगे, बीबी वोरा कमेटी ऑन पॉलिटिकल नेक्सस. दैट कमेटी क्लियरली सेड दैट देयर इज अ प्रॉपर नेक्सस बिटवीन कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस. प्रॉपर नेक्सस है. एवरीथिंग इज वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरीवन इज वेल क्लेम्ड. कितना पैसा किसको मिलेगा, कब मिलेगा, एवरीथिंग इज वेल स्ट्रक्चर्ड. इट्स अ प्रॉपर मैकेनिज्म एंड एवरीवन इज इन्वॉल्व. तो हमें बीबी वोरा के टाइम से ये बात पता है कि ये है ही है. एनीवे, अब कॉर्पोरेट गिव्स मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड देन दे इन्फ्लुएंस देम इन देयर फेवर. इट्स नॉट अ बिग थिंग दैट वी डोंट नो. तो करें क्या इसका, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन? अब सॉल्यूशन इसमें प्रॉपर नहीं है.
एक सजेशन दिया गया था, दिनेश गोस्वामी कमेटी. There was a commission appointed known as Dinesh Goswami Committee. Dinesh Goswami Committee suggested state funding of election. Dinesh Goswami Committee suggested state funding of election. It said, why shouldn't the state fund the political parties? क्योंकि अभी क्या होता है, if I will give you money, then I will make you dance to my tune. सीधी सी बात है. That's how it works. I will give you money to win elections. When you will come into power, you will change policy, program, agendas to favor me over other people. That's how it works always. But if I remove private financing, no private person can fund anyone. तो कहानी खत्म हो जाती है. How would you influence somebody you cannot fund? That was the logic of Dinesh Goswami Committee. पर अभी देख लेते हैं. Then all party committee was appointed under some Gupta, क्या नाम था उसका? इंद्रजीत गुप्ता, यस, नाम ध्यान नहीं आ रहा था मुझे. इंद्रजीत गुप्ता. So Indrajit Gupta committee was appointed. It was an all-party committee. इसका हाँ वार था, मैंने देखा नहीं, आपने लिख दिया था. Indrajit Gupta committee. What was the logic of Indrajit Gupta committee? It had to suggest कि क्या करना है. It gave a suggestion. Why shouldn't we create a national fund? There will be a national election fund. There will be a national election fund in which both the states and the union will contribute a money, a part, according to how many voters they have in their state, and union सबके लिए करेगा. They will contribute a part in this, and then it will provide funding to political parties. But which political parties? It said only to recognized. What is this recognized political parties? There are two kinds of parties in India. One is known as registered. Other is known as unregistered. Basically, if you are registered to Election Commission of India, you are a registered party, and there are thousands of registered parties. Among these registered parties, some parties are known as recognized, and remaining becomes unrecognized. So recognized मतलब you are recognized as a national party or a state party. अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है. Plus it said, एक तो ये हो गया that the funding from this fund shall go to only recognized party. Within that there was another problem that it should go according to the votes party get in previous election. अब imagine कीजिए, क्योंकि देखिए कोई तो criteria हमें set करना पड़ेगा ना. But understand, politics is not static. Politics dynamic होता है. अब imagine करिए 1980 में बीजेपी की 2 सीट थी. बीजेपी had 2 सीट्स इन लोकसभा, एंटायर लोकसभा, एंटायर पार्लियामेंट में सिर्फ 2 सीट्स. आज बीजेपी की 300 से ऊपर है. तो वुड इफ 1980 में यू हैव स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, बीजेपी को तो कभी फंड ही नहीं मिलता जिंदगी में. एंड देन हाउ वुड बीजेपी राइज? अब मान लेते हैं यू फॉर्म अ न्यू पार्टी टुमारो ऑन सम न्यू आइडिया.
Say for example, you form a green party in India. You believe that climate change is the most important concern or most important issue. Let's form a party, green party. जैसे you have यूरोप में and अमेरिका में भी the third largest party in America is green party. You have Republican, Democrat, they get 99% vote. 1% जो बच जाता है वो किसके पास गया है? Green party. So these are very few people. Nonetheless, you form a new party. If you won't receive funding and you cannot receive private funding, government will not give you fund because you are a new party, you have no election record, and you will not receive private funds also. तो election कैसे लड़ोगे? जादू है कोई? बात समझ में? That is the problem is because whenever there is a new idea, it always have few takers. मैं आपको बताया जब भी कोई नई वैल्यू आती है, only few people accept that value. Majority people reject that value. Because majority people are conformist who don't challenge the system they live in. अब उन conformist के लिए we cannot prevent evolution. And a new party and हमेशा होता रहता है. देखिए politics is a very dynamic thing. यहाँ पे new concepts come, old concept dies. New party emerge, old parties dies. It keep on going on. हमेशा जैसे for example आम आदमी party. Right now आम आदमी party is the biggest challenge to Congress. It is right now eating Congress. All the vote that shift from Congress goes to Aam Aadmi Party because the people who believe in Congress, they are more liberal socialists. They cannot vote to a right-wing party. बचा कौन? आम आदमी. That's how आम आदमी won in Punjab. आम आदमी देखिए वहां जीता है जहाँ पे उसका कंपटीशन कौन है? कांग्रेस है. बीजेपी से वो नहीं जीत पाता क्योंकि बीजेपी कंपटीशन है ही नहीं वहां पे. जैसे पंजाब में बीजेपी को पंजाबी वोट नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए. सेम साउथ में चले जाओ, साउथ में लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे चाहे कुछ भी चले जाए. प्रीवियस इलेक्शन 2019 व्हिच वाज रन ऑन नेशनलिज्म, 2019 इलेक्शन नेशनलिज्म पे हुआ था. बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे. ऑल द पीपल वर एंथुसियास्टिक, ऑल द पीपल वर एक्साइटेड बाय पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, दे वोटेड द गवर्नमेंट इन पावर. उस इतने हाई नेशनलिज्म में भी बीजेपी गॉट ओनली 5% वोट्स इन एंटायर साउथ इंडिया. नॉर्थ में उसका आई थिंक 60 समथिंग था, पर सॉरी 40 समथिंग था. तो पूरे साउथ में कितना वोट मिला? सिर्फ 5%. मतलब पूरे साउथ के केवल 5% वोटर ने उन्हें वोट दिया था. इवन व्हेन 2019 वाज अ नेशनलिस्ट इलेक्शन. बट रीजन हम आपको पता ही, मैंने आपको बताया था, नॉर्थ हैज मोर सीट्स देन द साउथ. नॉनदलेस दैट्स द प्रॉब्लम. कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इज डिफरेंट. सो अब साउथ में साउथ सदर्न पार्टी टॉकिंग अबाउट डिविड इन कल्चर. Don't they have the right to receive political funding? They do. Same BJP has the right to receive political funding in state election of South. Because without political funding, आप जीतोगे कैसे election? That is the main criticism of Indrajit Gupta committee. Ultimately, it was not implemented because it kills new ideas before birth. एक प्रकार का ये political feticide था. बात समझ में आया? वारदा क्लियर है? चलिए फिर जल्दी से लिखना शुरू करिए. व्हाट इज द हेडिंग वी हैव पुट? फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी. ओके, ठीक है. अच्छा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज हो गया होगा. ठीक है, उसके बाद सेकंड में है. ठीक है, लिखिए इसमें. अकॉर्डिंग टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, according to Central Information Commission, political parties comes under the scope of RTI. Comes under the scope of RTI, full stop. However, none of the political parties have implemented the order.
Take a full stop. Now put a subheading within this. Current provisions on funding. Current provisions on funding. Current provisions on funding. Within the side down, the current electoral laws. The current electoral laws have a loophole. The current electoral laws have a loophole in the form that it allows a political party to continue the expenditure while declaring income. To continue the expenditure while declaring income, and mandates that the candidates have to declare the expenditure, not income. Declare the expenditure, not income. Now put a subheading, issues. Issues में write down. There is a legal requirement. Under RPA 1951. Under RPA 1951 to declare all incomes. Legal requirement under RPA 1951 to declare all incomes except number 1, anonymous donation. Number 1, anonymous donation. Within the side down, under RPA 1951, under RPA 1951, a donation up to 20,000. A donation up to 20,000 was allowed. Up to 20,000 was allowed. Full stop. It has been changed. It has been changed to 2,000 recently. It has been changed to 2,000 recently. Okay, full stop. Next, write down electoral bonds. Second is electoral bonds. Within side down, it came as a replacement. It came as a replacement to electoral trust.
It came as a replacement to electoral trust, full stop. The electoral trust mandated this electoral trust mandate क्या लिखा हमने mandated the flow of private donation to the political parties ठीक है नाउ इसी के अंदर सेकंड पॉइंट में इलेक्टोरल बॉन्ड में ही सब हेडिंग डालिए इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम 2013 within side down these are non-profit organization. These are NPOs, non-profit organization formed under Representation of People Act to channelize private funding to registered political parties. Under section 29A. Registered political parties under section 29A of RPA 1951. 29A of RPA 1951. Full stop. Next point. The electoral trust companies cannot take donation from individual foreigners or foreign corporations. Individual foreigners or foreign corporations. Take a full stop. Next point. The trust maintains comprehensive list of all the funders and fundees. ठीक है बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आया इट मींस इट वाज नॉट anonymous because it maintains a comprehensive list of everyone who gave the money and everyone who received the money and it informs that to election commission so it was in public domain that's why it was a failed scheme nobody contributed ठीक है अब लिखिए नेक्स्ट सब हेडिंग डालिए लिखिए mechanism of electoral bonds. Now write down mechanism of electoral bonds. Mechanism of electoral bonds में write down government authorized bank
Sorry, what we wrote? Government authorized banks within bracket currently SBI. Government authorized bank within bracket currently SBI. Bracket close. Can issue electoral bonds as a debt instrument. Can issue electoral bonds as a debt instrument having validity of 15 days. Having validity of 15 days. Okay, full stop. Anyone can purchase them. Anyone can purchase them through checks or digital payments. Can purchase them through checks or digital payments. Okay, full stop. Then they can deposit. Then they can deposit these bonds. They can deposit these bonds to any political party. Deposit these bonds to any political party. Full stop. The political party concerned. The political party concerned will take these bonds to SBI. Will take these bonds to SBI and then SBI will transfer. And then SBI will transfer that money to the party's account. To the party's account, full stop. Now put a subheading: issues. Issues with electoral bonds. Issues with electoral bond में write down. Number 1, anonymity. Issues with electoral bond, number 1, anonymity. Anonymity में write down. Neither the name of donor, nor the name of donor, nor the name of donee, D-O-N-E-E, name of donor nor the name of donee becomes public. Second point, skewed deposits. Skewed, S-K-E-W-E-D. Skewed deposits. According to ADR, the majority of the bonds, according to ADR, the majority of the bonds goes to the political party in power. Goes to the political party in power.
Last point, corruption. Corruption, मैं write down. According to ECI, these bonds have led to the inclusion of more money. These bonds have led to the inclusion of more money in electoral finances. Leading to more corruption, and unethical behavior, unethical practices. More corruption and unethical practices. ठीक है, full stop. अब लिखिए थर्ड राइट डाउन, कंपनीज एक्ट. Companies Act, within this write down, under Companies Act, corporations cannot give more than 7.5%. Cannot give more than 7.5% of their net revenue. Of their net revenue in political funding. In political funding, full stop. Moreover, they were required to disclose the amount of funding in their annual report. Amount of funding in their annual report. Full stop. Both of these conditions have been removed. Both of these conditions have been removed. Here, full stop. Now put a subheading Supreme Court judgment. Put a heading Supreme Court judgment hyphen ADR within bracket Association for Democratic Reforms. Association for Democratic Reforms, bracket close, versus Union of India case. ADR versus Union of India case 2024. With this side down, Supreme Court
has declared electoral bonds and amendment to the Companies Act as unconstitutional because they violate fundamental right under Article 19(1)(a) fundamental right under Article 19(1)(a) to make informed choice. Full stop. Further, Supreme Court stated that transparency in funding is the cornerstone of informed election decisions. ठीक है, फुल स्टॉप. सब हेडिंग में, इसी में सब हेडिंग में डालिए रिमार्क्स. जजमेंट में ही हम रिमार्क्स लिख रहे हैं. रिमार्क्स में लिखिए CGI Chandrachud has said that absolute non-disclosure of the source of political funding through electoral bonds promote corruption and a culture of quid pro quo, promotes a culture of quid pro quo with the ruling party. Full stop. Second point, the scheme and the amendments gives unrestrained influence of the corporates. It gives unrestrained influence to the corporates, of nahi, to the corporates in electoral process. Full stop. Last point, the amendments are violative
amendments are violative of the principle of free and fair election. Principle of free and fair election and political equality. And political equality. Full stop. चलिए डन. वार्धा डन. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए. तो दिस आर द थ्री थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टूड. दो चीजें हमें पढ़नी थी. दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड द इलेक्टोरल फंडिंग. ठीक है. इसमें अब एक और चीज है, तीसरी लिखिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. इसमें लिख लो या तीसरा डाल दो पॉइंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड पॉइंट डाल दो मैंने तो. स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. State funding of elections. Within side down, Dinesh Goswami Committee. Dinesh Goswami Committee recommended that the state should provide funding for elections. The state should provide funding for election, isolating the political parties from the influence of external vested interest. From the influence of external vested interest. External vested interest, particularly of the corporations. Particularly of the corporations. ठीक है, full stop. Next para. The government then appointed an all-party committee. Under the chairmanship of Indrajit Gupta. Full stop. The committee gave the following recommendations. The committee gave the following recommendations. Write down number 1. The state funding should be in kind, not cash. The state funding should be in kind,
comma not cash, and that too for recognized parties only. And that too for recognized parties only. Full stop. Second point. The funding shall be in proportion to the percentage of valid votes. Proportion to the percentage of valid votes casted in favor of that party. Casted in favor of that party in previous general election. Full stop. Last point. A national election fund. A national election fund can be established for funding of political parties. Full stop. The union and the state governments will contribute a fixed percentage according to their voters' population. Fixed percentage according to their voters' population per annum. Full stop. Ab now put us abiding disputes over the proposal. Disputes over the proposals. Number one, in democracies, free and fair elections. In democracies, free and fair elections are a key ingredient. And providing political funding only to recognized parties and that too TWO and that too based on the votes casted. That too based on the votes casted will give advantage to
to already established parties. Will give advantage to already established parties. Full stop. Full stop. Next point. The independent candidates. The independent candidates and newly emerged parties comma, who have no financial base. Independent candidate and newly emerged parties, comma, who have no financial base will be left behind. Who have no financial base will be left behind. Full stop. They are very critical. They are very critical to raise the voices of the people. They are very critical to raise the voices of the people from time to time. To raise the voices of the people from time to time. Full stop. Last point. The Election Commission. The Election Commission has also opposed state funding of elections. Has also opposed state funding of elections, believing it would lead to inclusion of more money with no guarantee of exclusion of black money. With no guarantee of exclusion of black money. फुल स्टॉप. चलिए क्लियर है. अब नेक्स्ट इशू डालिए क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. तो पहला था हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, दूसरा फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, तीसरा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में 3 थे. ठीक है. कौन कौन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी में आपका था? आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2000 की लिमिट एंड कंपनीज एक्ट, और उसका सॉल्यूशन में एक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. अब तीसरा मेन इशू है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. इलेक्टोरल इश्यूज में तीसरा पॉइंट है ना ये. ठीक है. ठीक है. तो पहला देखिए, मैं रिपीट कर देता हूँ. तो प्रॉब्लम विद इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम हम लिख रहे हैं. उसमें पहला था पार्टी सिस्टम, उसके बारे में हमने पढ़ा. फिर इलेक्टोरल इश्यूज में पहला था रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टीज, दूसरा था फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, अब तीसरा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट. हाँ जी. तो ये क्या ड्रामा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट? कुछ नहीं है, सब फॉरेन प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू है, प्रूफ नहीं हुआ, सब ऑनेस्ट है. ठीक है. तो बेसिकली वी हैव समथिंग कॉल्ड सेक्शन 8.
लिखेंगे नहीं, कोई टाइम नहीं है, मैं समझा देता हूँ. वी हैव सेक्शन 8. इट प्रोवाइड्स टू काइंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन. दो तरह की डिस्क्वालिफिकेशन है इसमें. एनी सिटिंग मिनिस्टर और एनी पर्सन, ठीक है, इफ दे आर कन्विक्टेड ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्राइम्स. इसमें डिफरेंट तरह के क्राइम्स हैं. तो मान लेते हैं इलेक्टोरल फ्रॉड, सेडिशन, डॉरी, सती. तो ग्रेडिंग ऑफ क्राइम करा हुआ है. देयर डिफरेंट प्रोविजन विद इन सेक्शन ए, सब सेक्शन 1 2 3 4. So depending upon the type of crime committed, there are two kind of disqualification of an MP or MLA. एक होता है disqualification since release और दूसरा होता है disqualification since punishment. मतलब if you are declared, मान लेते हैं there is a crime, say for example assault, आपने किसी को पीट दिया. अब असॉल्ट में मान लेते हैं देयर इज अ पनिशमेंट ऑफ 4 years, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए होता है, 2 से ऊपर पे ही काउंट होता है. मान लेते हैं देयर इज अ 4 year पनिशमेंट. सो इट कम्स इनटू सिंस पनिशमेंट, एंड फॉर असॉल्ट यू गेट 3 years ऑफ पनिशमेंट. सो 4 year की पनिशमेंट मिल सकती है. कितने की मिली आपको? 3 साल की. तो इट्स नॉट अ वेरी सीरियस क्राइम, हीनियस क्राइम्स में नहीं आता. तो इस केस में यू विल बी डिस्क्वालिफाइड सिंस पनिशमेंट. डिस्क्वालिफिकेशन है आपका 5 years का. So you will serve 3 years disqualification, and after release you will serve 2 more years. 2 more years since punishment है. एक होता है if the crime grading है इसमें, when you lead to high crime, जैसे सती. If any MP or MLA has been proved accused of sati, rapes, murders, इस केस में you get disqualification since release. तो इसमें से for example you committed a murder, ठीक है, you got 20 years of स्पेशल पनिशमेंट. 3 तरह की पनिशमेंट होती है. एक होता है डेथ पेनल्टी, उसके जस्ट नीचे आता है स्पेशल कैटेगरी ऑफ पनिशमेंट, उसके बाद आता है लाइफ सेंटेंस, आजीवन कारावास. सो ऑफन पीपल को 2 ही पता होते हैं. दे थिंक दैट लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द हाईएस्ट, उसके ऊपर सीधा डेथ होता. नहीं, बीच में एक और कैटेगरी होती है, स्वामी सहजानंद केस में बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने. एक स्पेशल कैटेगरी पनिशमेंट होती है. इट इज मोर देन लाइफ टर्म एंड इट इज लेस देन डेथ पेनल्टी. It's higher than life term and less than death penalty. So let's say 20 years imprisonment you got. अब of course murder है तो इसका मतलब it's a heinous crime. It means since release. So you will be disqualified since release. तो 20 साल तो ये plus 5 साल और, तो टोटल डिस्क्वालिफिकेशन कितना हो गया? 25 साल. 25 साल तो बहुत बड़ा टाइम है. मान के चलिए, देखिए, इफ यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स फॉर 5 to 6 years, यू आर डन. खत्म है आपकी कहानी. Until unless you are somebody's son. मान लेते हैं लालू प्रसाद यादव कभी भी जेल से बाहर निकले तो उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, वैसे इसमें आपका 6 years होता है, 6 year डिस्क्वालिफिकेशन होता है. कोई नहीं, क्लियर है. तो दीज आर 2 kind of डिस्क्वालिफिकेशन. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं इस बात को? प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज इट इज आफ्टर कन्विक्शन. दिस सेक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन you are convicted, not when trial is going on. When you are under trial, this does not apply on under trials. That's the problem. So according to the 2019 analysis by ADR, Association for Democratic Reform, you have 43% of your MPs with criminal cases. Out of this, around 24% have heinous crimes against them, multiple rapes and murder charges. And why it's a problem? Simple reason. Criminalization of parliament affects every sphere of life. If you have criminals, rapists, murderers sitting in your parliament, they will never make laws, they will never bring reforms that will help you, that will empower the people at the cost of the government, the bureaucracy. They will never implement police reform. They will never free police from their control. They will never bring judicial reform. They will not hire more judges so that the cases are tried earlier, more judgment comes early. हालांकि इसमें एक इनोवेटिव आइडिया था, कभी हुआ नहीं. कांग्रेस के टाइम से एक ड्रामा चल रहा है 1990s, जब हमारे पास कोलिशन सरकार हुआ करती थी, कि व्हाई शुडंट वी हैव स्पेशल कोर्ट्स फॉर पॉलिटिशियंस. जैसे आपके पास फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होते हैं. कोर्ट्स में वैरायटी होती है. एक होता है फास्ट ट्रैक,
These courts have been made under various laws. इनका काम होता है to exclusively deal with particular kind of crimes. जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऑन रेप्स, तो उसमें क्या होता है, इट विल हियर ओनली रेप केसेस एंड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस, डेली हियरिंग होगी, तो चांसेस इज इट विल कंक्लूड अर्ली. बट उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है. फास्ट ट्रैक कोर्ट में यू हैव अ जज, अब वही नॉर्मल कोर्ट में भी बैठता है और वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी बैठता है. सो फास्ट ट्रैक कोर्ट इज ऑफन सीन बाय द जजेस एज एन एडिशनल बर्डन. तो चक्कर में उन्हें पसंद नहीं आता. एनीवे, सो वी शुड हैव नॉट ओनली फास्ट ट्रैक, वी शुड हैव एक्सक्लूसिव फास्ट ट्रैक कोर्ट्स. अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का जज है तो वो कहीं और नहीं बैठेगा. द ओनली रोल दैट पर्सन विल प्ले इज फास्ट ट्रैक. देयर इज अ वैरायटी ऑफ फास्ट ट्रैक court known as politicians court. This court will handle every case on politicians only without other cases of any nature. So chances is judgment will come sooner. That is the most sustainable solution. बाकी प्रॉब्लम तो देखिए है ही है. पुलिस is controlled by the politician. You control the way you like. You are a minister, तो आपका कुछ नहीं होने वाला. Because imagine कर लीजिए, you may be anyone, you won't have the guts to prosecute your own minister. अब होम मिनिस्टर के खिलाफ आप कहाँ से एफआईआर लिख लोगे, इतनी औकात किसी की नहीं होती. Having said that, जुडिशरी प्रेशराइज करेगी तो भी आप इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं करोगे, सबूत खुद मिटाओगे ताकि किसी और को मेहनत ना करनी पड़े. दिस इज द प्रॉब्लम. दैट्स व्हाई मैंने आपको कई बार समझाया भी है. वी नीड अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पुलिसमैन नोन एज डिटेक्टिव्स. जैसे वेस्टर्न मॉडल, वेस्टर्न कंट्रीज में दो तरह के पुलिसमैन होते हैं. वन इज लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हु वियर यूनिफॉर्म. देयर इज अनदर डिटेक्टिव पुलिस. दे नेवर वियर यूनिफॉर्म, दे आर इन नॉर्मल क्लोथ्स एंड देयर ओनली पर्पस दे सर्व इज इन्वेस्टिगेशंस ऑफ क्राइम, नथिंग एल्स. सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं. और इसमें द बिगेस्ट रोल इज प्लेड बाय अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, स्टेट अटॉर्नी, यूनियन अटॉर्नी. जैसे आपके पास होता है अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल्स, वो उनकी मदद करते हैं. And large number of crimes are assisted by the state itself. जैसे हमारे देश में क्या होता है, majority of the Supreme Court judgment comes on PIL, where common people, civil society goes to Supreme Court. बाकी देश में अलग होता है. जैसे अमेरिका में it is the government that goes to court often. वहाँ पे you have district attorney. It's a law officer appointed, not police वाला, law officer, advocate kind of. Appointed by the government and he keeps on a vigil on the state. अगर कोई भी क्राइम होता है, जैसे मान लेते हैं some event, that person on behalf of the people goes to court, make charge sheet, file cases, ask the police to investigate. So वहां पे गवर्नमेंट जनता के लिए काम कर रही है on behalf of people. वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी will go on behalf of the people against the own government. अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ on behalf of the people goes to court. यहाँ पे ऐसा मॉडल नहीं है. यहाँ पे आप जा सकते हो तो जाओ, सरकार का कोई इंटरेस्ट है नहीं. तो वी नीड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तभी हम डील कर सकते हैं इससे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, और बहुत जरूरी है. विदाउट क्लीनिंग योर पार्लियामेंट यू कैन नॉट क्लीन एनीथिंग. कुछ भी ट्राई कर लो, कितने भी निर्भया के केस हो जाएंगे, क्यों नहीं रुकते चीजें? बिकॉज देखिए, लॉ जो होते हैं, यू हैव पेनल्टी. अब तो और सीवियर हो गई है आफ्टर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. 16 से ऊपर वाले को भी आप ट्रीट कर सकते हैं एज एन एडल्ट. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि दीज आर क्राइम्स ऑफ पैशन. और ट्रायल नंबर, मर्डर पहले दिन कोई नहीं करता. मर्डर करने के लिए स्टेजेस लगती है. यू विल स्टार्ट विद अ स्मॉल क्राइम, ओवर टाइम यू विल ग्रेजुएट टू मर्डर. एक्सीडेंटल मर्डर अलग होता है. एक्सीडेंटल मर्डर जिसे हम बोलते हैं कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, where a person has been killed but your intention was not to kill. जो लगता है आपका एक्सीडेंट्स के केस में, तो ड्राइविंग अ कार फास्ट, somebody dies by your car, तो क्या बनता है, culpable homicide not amounting to murder. You have not killed that person intentionally, but nonetheless it has been killed by your actions. तो accidental murders की बात अलग है. Apart from that, intentional murders usually कोई नहीं करता. कोई नहीं करता. चाहे आपको कितना भी बुरा मन में आता तो कई बार होगा, करते नहीं है लोग. ठीक है, तो दैट इज द थिंग वी हैव. पर उसके लिए स्टार्ट कहां से होता है? छोटे क्राइम से. यू विल कमिट स्मॉल क्राइम्स, देन यू विल गो अनपनिश्ड. तो आप धीरे धीरे क्या करेंगे? ग्रेजुएट. एंड यू टेस्ट, एक्चुअली यू टेस्ट द लिमिट ऑफ द स्टेट. आप सरकार की औकात देखते हो कि तुम कब हमें पकड़ने आओगे. एंड दैट्स व्हाई आई से इफ यू कैन नॉट एनफोर्स अ लॉ, नेवर मेक इट. छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट करती है.
If you make a law, people disobeys and they are not punished, it sends a signal in the society. If you are powerful, you are above law, and that's why they want to be powerful. You want to be you are a criminal. Why you aspires to become a politician? Because you have seen the Prime Minister of India having a rally during Corona, but he was not fined. But a common person who went outside was even bitten by the police officer. वो एक खाकी जो आम आदमियों को मार रही है, इनके सामने नतमस्तक है. So when you see this, जब आप छोटे बच्चे हो, when you see this event, when you schools and colleges, तो आपके दिमाग में पैसिवली क्या बात गई? Power means above the law. And when you commit crime or become a criminal over time, तो आपको वो बात याद रहती है that if you are powerful, you are above the law. So what you do? You become the law. कैसे बनते? Become politicians. This is the problem. Main foundation जो इस problem की वो है rule of law. A country where rule of law exists, where anyone, irrespective of their position, is punished. वहां पे people do not have craving for power. और power की craving नहीं होगी तो ये लोग politicians भी नहीं बनेंगे. Politician बनने का सबसे बड़ा reason यही होता है, power. The very person who tried to arrest you will start saluting you. क्लियर है? तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन करना चाहिए. बट इंडिया इज आपको पता ही है, इंडिया इज एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट स्टेट. तो सॉफ्ट स्टेट में रूल ऑफ लॉ वीक होता है, पावर ही लॉ है. इन दैट सिनेरियो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट रुकता नहीं. चलो वो तो हम रोक नहीं पाएंगे, तो सेकंड बेस्ट है, कम से कम ये तो कर ही सकते हो. अब इसके लिए कोई स्पेशल चीज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा कानून पास करना है. पार्लियामेंट से नहीं तो सरकार अपने ऊपर से भी कर सकती है. सरकार छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता? जो सुप्रीम कोर्ट काम ही है जस्टिस, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर में है. सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये कर सकता है. हर दिन वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं. मैंने को बताया था 2 आर्टिकल है, 142 और 144. आए दिन बकैती करी है उन्होंने 142 में. लेकिन जब बात यहां आती है तब वो क्या कहते हैं, नहीं यार ये हमारा काम नहीं है. भाई जस्टिस के अलावा आपको कोई काम ही नहीं है. बाकी चीजों में जो आप इंटरफेरेंस कर रहे हो वो आपका रोल नहीं था. यू हैव नो रोल टू डिसाइड. आप हर चीज पे जजमेंट दे रहे हो कि यहाँ पे पूजा होगी, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी, उस तक पे आप बोल रहे हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पे नहीं बोल रहे. तो जुडिशरी चाहे तो इसे कर सकती है, पावर है उसके पास, करेगी नहीं. बिकॉज अंडरस्टैंड लिमिटेशंस होती हैं हर चीज की. यू वोंट लाइक टू इंटरफेयर टू मच, नहीं तो फिर आप में भी कोई इंटरफेयर करेगा. आप जो कलीजियम लेके बैठे हुए हो, जिसे चाहे अपॉइंट कर रहे हो, एक फेज कहा जाता है कलीजियम, भगवान किस पे कब प्रसन्न हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं. जिसका मन करा जिसे चाहे जज बना दिया. एंड यू हैव लिंक्स, so you have more chance of becoming judge. Not all judges are by that mechanism, but there are a lot of judgment which are very disputed, very disputed. क्योंकि जिसको आप जानते हो वो आपकी नजर में अच्छा है, और जिसको आप नहीं जानते हो आपकी नजर में बुरा है. तो चीफ जस्टिस बदला तो अपॉइंटमेंट बदल गई. हमने करा होगा, जुडिशरी तो कर चुके हम, नहीं किया? अरे यार मुझे बाबा याद रहता है, हमने कर लिया. अच्छा इसकी बात करना है शायद हमें. अच्छा फाइन. वहां पे हम कुछ केस स्टडी करेंगे जस्टिस कर्नन जैसे लोगों की. जस्टिस कर्नन आई थिंक कलकत्ता या कहाँ के हाई कोर्ट जज थे, अपॉइंटेड बाय कलीजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोर्स. तो उन जजेस, उन साहब जी ने क्या करा, ही गेव एन ऑर्डर टू सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट ऑल सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड सबमिट अ रिपोर्ट टू हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ करप्शन. तो सुप्रीम कोर्ट गेव अ स्टे ऑन हिज ऑर्डर, और उसके बाद रिमूव्ड हिम फ्रॉम ऑल द केसेस, इंस्टीट्यूटेड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी. तो जुडिशरी इंडिया में इतनी पावरफुल है तो कोई लॉ लगता ही नहीं है. जजेस पे कोई लॉ नहीं लगता. दे आर द मोस्ट इम्यून पीपल ऑन अर्थ. उन पर कोई लॉ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता. इंडिविजुअल बात अलग है, जुडिशियल फॉर्म में नहीं लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने मर्डर कर दे, रेप तो लगेगा भाई, वो तो सब पे लगता है. बट आपने ऑर्डर दिया, वो कितना एथिकल था, नहीं था, पैसे लेके दिया, कैसे दिया, किसी को नहीं मतलब इससे. वहां आती है प्रॉब्लम. एनीवे, जस्टिस खन्ना जैसे हर कोई नहीं होता. हु कैंसल इंदिरा गांधी कैंडिडेचर, एंड ही गेव अ वेरी रिस्की जजमेंट. चले जो भी है, एंड ही वाज आल्सो इन्वॉल्व इन एडीएम जबलपुर केस. तब तक वो बेचारे सुप्रीम कोर्ट आ गए थे. इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बोला इंदिरा गांधी को, तुम्हारा कैंसिल होता है भैया, कैंसिल, यू आर फायर्ड. इंदिरा गांधी फेल्ट बैड. नेक्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में थे, फिर एडीएम जबलपुर केस आ गया जिसमें चंद्रचूड़ जी के पिताजी थे, ये जो अभी चीफ जस्टिस है हमारे, इनके पिताजी ने बोला बिल्कुल सही बात है, हीबियस कॉर्पस नहीं मिलेगा आपको इमरजेंसी में. खन्ना थे, उन्होंने बोला था मिलेगा, और इसका उन्हें सजा भी मिली थी.
उनके सबऑर्डिनेट को प्रमोट करके बना दिया, एमयू बैग थे मेरे ख्याल में, ही वाज मेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुपरसीडिंग जस्टिस खन्ना। एनीवे, तो देखिए अच्छा एग्जांपल भी देख लिया हमने, जस्टिस खन्ना who has said this to his sister when he was going to deliver the judgment कि this judgment will cost me my chief justiceship। वो बोल के गए थे, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट, कि उन्होंने बोला था अपनी सिस्टर कि मैंने जजमेंट देने वाला हूँ और मुझे पूरा यकीन है इसके बाद मैं चीफ जस्टिस नहीं बनूंगा। तो ऐसे लोग भी हैं, सैक्रिफाइस देयर पोजीशन फॉर समथिंग गुड, और फिर जस्टिस कन्नन जैसे लोग भी हैं। ठीक है, तो मिक्स है। नॉनदलेस रिमेंबर, ये एक ऐसा रिफॉर्म है जो इजी है, बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, ये वो लो हैंगिंग फ्रूट है। इसे करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई लॉ नहीं, छोटा सा एफर्ट चाहिए, एक नोटिफिकेशन, एक जरी सी नोटिफिकेशन यूनियन गवर्नमेंट की खुद की, लॉ भी नहीं चाहिए इसके लिए, सिर्फ नोटिफिकेशन, या हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट, वो भी कर सकते हैं, वो भी एक नोटिफिकेशन पास कर दे तो तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाएगा, एक्सक्लूसिव बन जाएगा। तो ये छोटा सा काम, इसमें थोड़ा अलग चीज है, इसमें तो आपको लॉ अमेंड करना पड़ेगा, ड्रामे ज्यादा है इसमें कोई ड्रामा नहीं है। सो जिस दिन ये नहीं हो रहा तो बाकी तो छोड़ दो, वो हाई हैंगिंग फ्रूट्स है, उनको तो बाद में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो दिस इज व्हाट आई हैव ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट, इसे हम कल लिखेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू रिलीजन इन पॉलिटिक्स। फोर्थ इशू में मूव करेंगे रिलीजन इन पॉलिटिक्स, जिसमें हम कुछ जजमेंट देखेंगे, हिंदुत्व जजमेंट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदुइज्म एक वे ऑफ लाइफ है, रिलीजन नहीं है। ठीक है, उसके बाद अलग जजमेंट समझेंगे। अच्छा, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमने अभी देखी नहीं है, वारदा, आई होप यू हैव माय मेल आईडी, मेल है ना यहाँ पे, मैं देख नहीं पाऊंगा। आप आपने मेल किया है मुझे, एक मिनट में चेक कर लूं, आपके नाम से शायद मेल नहीं है मेरे पास। अच्छा हाँ, आज ही तो मेल किया शायद आपने, मैं हाँ अभी किया, देखा मैंने। ओके फाइन, आई हैव सीन दैट। तो जो भी क्लासेस आपने बताई, आई विल टेल यू द टेक्निकल टीम, वो कुछ ना कुछ नोट्स का जुगाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, देन मिलते हैं।